so that you all will be fine. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज आपके लिए और एक टॉपिक रखा है जो एम.एड सेकंड सेम है फिलासफी में, जो आपको एजुकेशनल थिंकर्स है, फिलासफर्स है, उनमें हमने सारे डिस्कस किए, जैसे इकबाल है, डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह है, अबू कलाम आज़ाद है, अरविंद घोष है, वो भी हमने रखे अपने यूट्यूब चैनल पर। अब हमारा और एक क्वेश्चन रहता है, वो है आपका अल गज़ाली जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे, इसका जो है एजुकेशनल फिलासफी के बारे में अल गज़ाली। तो डेट दिया है यहाँ स्लाइड में, आप देख सकते हो 1058, तो यहाँ पर है 1444 है, तो इस ये वाला डेट है उसकी बर्थ एंड डेथ की। तो फुल नेम है उसका अबू हमीद, जो है उसका मोहम्मद अतुसिया अल गज़ाली, ये उसका पूरा नाम है। आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, इसको राइट डाउन कर सकते हो, फिर आप न्यूट्रल के लिए। उसमें जो है अल गज़ाली वाज बॉर्न इन, उसमें है तबरान, a town in the district in Tus district, खुरासान, नाउ पार्ट ऑफ द ईरान। ईरान में एक जगह है, तो वहीं पे इसकी जो पैदाइश है वो हुई है अल गज़ाली की। ही वाज ए मुस्लिम स्कॉलर, उसमें है जुरिस्ट, रैशनलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट ऑफ ए पर्शियन ऑरिजिन। तो ये इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, ये आप उसमें लिख सकते हो। तो उसमें है, अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस गज़ाली के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो बहुत ज़बरदस्त था। उसमें इसमें है अल गज़ालीज़ फिलासफी ऑफ एजुकेशन है। अल गज़ालीज़ हैज़ रिटन ब्रॉडली ऑन एजुकेशन, उसने बोला है अल गज़ालीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फिलासफी आर सम ऑफ द 40 बुक्स दैट कंसिस्ट ऑफ अल हय्या उलूमुद्दीन। तो यहाँ पर है अदर रिलेटेड वर्क इंक्लूड, उसमें है हय्युल वहलदुल स्टूडेंट्स है, लेटर टू पे पीपल, मीज़ानुल अमल है, एंड अल मुनकिद मिन अल तला है, अवॉइडिंग फ्रॉम द एरर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है अल गज़ाली फिलासफी ऑफ एजुकेशन, तो आप देख सकते हो। इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो ज़बरदस्त रहा है। व्हाट इज़ एजुकेशन के बारे में उसने बोला है, उसमें है गोइंग थ्रू दिस इज वेरियस राइटिंग्स वी कैन ड्रॉ मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अल गज़ालीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। जो अलवी है डिस्क्राइब्स इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट व्हिच कंटिन्यूज प्रोग्रेसिवली एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द स्टूडेंट्स लाइफ। अल गज़ाली सीज एजुकेशन एज अ स्किल और टेक्निक रादर दैन ए साइंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। उसमें है डियर स्टूडेंट्स रियलाइजेशन ऑफ गॉड्स वर्ल्ड एंड लाइफ, द कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड हिज रिलेशनशिप विद द ह्यूमन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अल गज़ाली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. Al-Ghazali has separated this worldly life from the life after death. He considers that this world life is temporary and the life hereafter is permanent. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। द कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है। इन Al-Ghazali's view, true knowledge is the knowledge of the God, his books, his prophets, his creation, including the kingdoms of earth and the heavens. It also includes the knowledge of the Sharia as revealed by his prophet. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी लिख सकते हो। उसमें character education पे ज़्यादा जोर दिया। Al-Ghazali explained that the good education will give youngsters a great character and help them to carry on with an honorable life, and a bad childhood will destroy their character. Education is not limited to the fun and importing the information to the mind, but includes all aspects of the learner's religious, moral, intellectual and physical personality. तो dear students, ये important point है उसकी philosophy में, आप देख सकते हो उसको। उसमें है आप देख सकते हो moral development. Al-Ghazali asserted that the moral development of the youth is one of the primary objectives of education. He gives an example he gives an example of God to explain the process of moral education. Before planting flowers, the ground must be declared of the weeds. Similarly, teacher must purify the student's soul by removing from it filthy the thoughts and immoral deeds before teaching moral goodness, and then all acts should be carried out for the sake of God. तो ये important point है dear students, आप इसमें उसकी philosophy पढ़ सकते हो, ये important point है। अब है social development. Al-Ghazali has also highlighted the spiritually from individual responsibility of the self. Allah has assigned him responsibilities appreciated to the societal development as well. He refers such responsibility as farz-e kifaya. For example, society needs doctors to keep people healthy who will be in better position to fulfill their responsibilities towards Allah. तो ये कुछ important points है, आप देख सकते हो उसमें। Role of parents है। Al-Ghazali views that the role of parents is significant because of children interact with his parents more than any other person and influence the child is the most. Therefore, Al-Ghazali explains the responsibility of parents to develop all aspects of the child's initial education. These aspects include the language, cultural traditions, religious and moral beliefs. उसमें important point जो है वो
है रोल ऑफ टीचर के बारे में. When students start seeking questions from his teacher, Al-Ghazali emphasizes that the role and impact of the teacher is more important than parents. Al-Ghazali asserted that the educator's own life must be filled with which qualities which he instructs the youngsters to attain. तो dear students ये important point है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ द स्टूडेंट्स में है. अल-गज़ाली कंसीडर स्टूडेंट्स ओन एफर्ट्स एंड बिहेवियर एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द टीचर्स एंड पेरेंट्स. स्टूडेंट्स should not consider themselves superior to their teachers and should accept the knowledge and learning provided by them. The students should accept the advice of the teachers and trust the guidance received. उसमें डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ब्रॉड गाइडेंस ऑन करिकुलम. इन अल-गज़ाली curriculum of education was not strictly defined. It was flexible, allowing students to the ability they aim to study. The curriculum suggested by Al-Ghazali can be viewed from the two aspects, the content point of view and the methodology point of view. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उसकी फिलोसफी में लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स. इसमें है फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू अल-गज़ाली डिवाइड हिज करिकुलम इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 और उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, दैट इज फर्ज एंड दैट इज द मैंडेटरी करिकुलम. दिस इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ द कुरान, लॉजिक एंड हाइजीन. द पर्पस ऑफ द मैंडेटरी करिकुलम इज टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू लिव देयर लाइव्स एज इंडिविजुअल एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी. उसमें है ऑप्शन है फर्ज किफाया विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कंपल्सरी, दैट इज एज सोसाइटी समवन मस्ट बी डूइंग इट विच इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी पर्सन. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें देख सकते हो. Effects of societal environment. Al-Ghazali gives importance to the environment in which the learner takes place. Before entering into a situation, it is the child's parents who play the main role of model. After entering this institution, the most important role play is the teacher. उसमें है जैसे understanding the child's psychology. Al-Ghazali signifies that if the teacher wants to have a maximum impact on the children's moral development, they should be aware of the how children's motivation and impression change during the course of their lives. तो ये important point है students, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो. Relaxed mental state through the co-curricular activities. Al-Ghazali highlighted the children need time to relax through their actions and different experiences to ease the fatigue of their study. Such as they recommend that the student must be given reasonable time to play games. तो ये important है. Reasonable time. Conclusion में आप इसमें लिख सकते हो Islamic education should be clear in objectives which essentially should be linked with the objective of life. The purpose of the education should be basically to be a great realization and to facilitate to achieve the purpose of life, which is submission to Allah. And as Allah says, did I not create the Jannah and the human beings except for the purpose they should be worship me? So Al-Quran quoted. तो ये important है, इसमें है अब है ये वाला स्लाइड जो पहला इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना है इसका पूरा नाम क्या है. उसके टाउन में ईरान में खुरासारा में पैदा हुए स्कॉलर थे, रैशनलिस्ट थे, स्पिरिचुअलिस्ट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज जानते थे. एंड उसमें जो है उसने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं. उसमें फील्ड ऑफ एजुकेशन फिलासफी है, 14 बुक्स दैट आंसर जो अहलुल दीन है, अदर रिलेटेड वर्क इंक्लूड. इसमें बहुत सारी बुक्स और भी हैं, आप यहाँ से इसमें कोर्स सकते थे. उसके बारे में गोइंग थ्रू द वेरियस राइटिंग्स वी कैन ड्राइव मीनिंग ऑफ एजुकेशन. Al-Ghazali point of view all describe that interaction between the teacher and the student which continue progressively and continuously throughout the student's life. Since education is a skill or technique rather than science, तो ये इंपॉर्टेंट है उसकी फिलोसफी में. Realization of God's world and life. तो इसमें है कि concept of God and his relation with the human life is the basic foundation of Al-Ghazali philosophy of education. उसमें है he considers this worldly life is a temporary and hereafter जो है वहाँ पर है permanent है. तो ये इसका मेन फोकस है. उसमें है concept of classical knowledge. In Ghazali, the true knowledge is the knowledge of God, his books, his prophets, his creation, including the kingdom of earth and heaven. तो ये important है. It also includes the knowledge of Shara as revealed by his prophets. तो ये important point है जैसे कि आपको याद रखना है. कैरेक्टर फॉर्मेशन पे ज़्यादा जोर दिया है. कैरेक्टर जो मैं आपको बार बार हुआ. एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द ट्रेनिंग एंड इंपोर्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द माइंड बट इंक्लूड द एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर रिलीजियस मॉरल इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पर्सनालिटी. तो ये वाला जो यहाँ पर जो मैं स्लाइड आपको देख रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट है. ये रिलीजन है, मेंटल है, मॉरल है, स्पिरिचुअल है. तो ये है एंड मॉरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर है. To explain the process of moral education before planting the flower, the ground must be cleared of it. Similarly, the teacher must be the student control by removing from it healthy thoughts and immoral deeds before the teaching and moral guidance. तो ये है इम्पोर्टेंट. तो उसमें हम देखेंगे एक बार हम करेंगे जो उसके करिकुलम इसमें एक सेकंड है सोशल डेवलपमेंट पे ये हैं ये रोल ऑफ टीचर, ये कंटेंट व्यू मेथडोलॉजी और करिकुलम के बारे में देखो. कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेथडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्लेक्सिबल करिकुलम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट स्ट्रिक्टली बट डिफाइंड. या करिकुलम होना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मगर इसमें कंटेंट एंड मेथडोलॉजी. और कंटेंट एंड मेथडोलॉजी में उसने बोला जैसे कंटेंट में बोला
ये चीज़ें ये करिकुलम है मेरा बुलियन सॉरी ये वाला करिकुलम था ये। तो होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड इट। और चाइल्ड वुड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया, ये भी आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।